Hello students, this video is for grade LKG. So let's start. In this sheet, we will learn about three different subjects which are English, Maths and EVS. So let's get started with our first subject of this sheet which is English. The question says, write the beginning letter of the picture. So what we will do is, हमें क्या करना है, पिक्चर का जो बिगिनिंग लेटर है फर्स्ट लेटर ओके विथ विच द स्पेलिंग स्टार्ट, जिससे स्पेलिंग स्टार्ट होती है पहला लेटर, वो लेटर यहाँ पे राइट करना है. व्हाट इज द पिक्चर? पहला पिक्चर आप पहचानिए. व्हाट्स द फर्स्ट पिक्चर? कार. यस, इट इज अ कार. CAR, कार. C for car. So the first letter is C. C for car. Next letter is, next picture is ball. Very good. It is a ball. B for ball. Spelling is BALL. 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 Now identify the third picture. तीसरी पिक्चर कौन सी है? What's the third picture? Yes, it is a jar. J for jar. jar मतलब होता है कोई ऐसा कंटेनर जिसके अंदर हम कुछ रख सके. ओके, जैसे हम कहते हैं ना डब्बा, बॉक्स, तो वही उसको कहते हैं हम जार. जार होता है कांच का. ओके, जार किसका होता है? कांच का होता है. उसे हम कहते हैं जार. JAR, jar. So in this way you have to fill up all the beginning letter of the picture. Let us revise A to Z with one words. A for apple. B for boy. C for cow. D for drum. E for eagle. F for fan. G for grapes. H for horse. I for ink pot. J for joker. K for king. L for lion. M for man. N for nose. O for owl. P for penguin. Q for quilt. R for rose. S for sun. T for tiger.
U for umbrella. V for vase. W for watch. X for Xmas tree. Y for yacht. Z for zebra. So we have read A to Z with one words. Now let's move to our next section of the sheet, maths. The question says, count and write the number and color the picture. Okay, in this what we have to do is we have to count the pictures. पहले हमें क्या करना है, इन pictures को count करना है. टोटल कितने triangles हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, so there are 7 triangles. तो बॉक्स में क्या राइट करेंगे? नंबर 7. We will write number 7. और फिर पिक्चर्स को हम कलर भी करेंगे. ओके, जो ट्राइंगल्स हैं इनको हम कलर भी करेंगे. वी विल कलर दीज ऑल्सो. नेक्स्ट में स्टार्स हैं. ओके, स्टार्स को काउंट करना है और फिर कलर करना है और नंबर राइट करना है. अंडरस्टूड? सो व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू काउंट एंड राइट देन कलर द पिक्चर. काउंट भी करना है, राइट भी करना है और पिक्चर को कलर भी करना है. Now see the next question. Color the correct number of object indicated by the number. Okay, 13. देखिए आप देख सकते हैं 13 दिया है. एक साइड पे पिक्चर्स बनी है, दूसरी साइड पे नंबर्स लिखे हैं. तो नंबर्स में क्या है? 13. तो पिक्चर सिर्फ 13 पिक्चर को ही कलर करना है. ओके, सिर्फ 13 ऑब्जेक्ट्स को ही हम कलर करेंगे. अंडरस्टूड? जितना नंबर दिया है सिर्फ उतने ही ऑब्जेक्ट को कलर करना है. लाइक 15 गिवन है तो सिर्फ 15 रिंग्स को ही सर्कल करेंगे, कलर करेंगे. 11 है तो 11 हार्ट्स को ही कलर करेंगे और जो बाकी बचेगा उसे कलर नहीं करना है. ओनली वी हैव टू कलर द करेक्ट नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स. जितने नंबर दिए हैं उतने ही ऑब्जेक्ट को हमें कलर करना है. अंडरस्टूड? या. Now, let's move to our last section of this sheet, which is EVS. Write the name of the flowers given below. What we have to do is, we have to name the flowers. In flowers के name हमें write करना है. Okay? What we have to do? We have to name the flowers like rose, sunflower, jasmine, marigold, pansy, champa. Okay? We have to name these flowers. And I hope you can identify. आप इन्हें identify भी कर सकते हो और इनके नेम भी राइट कर सकते हो. Also you have to learn these spellings also. Understood? इन spellings को आप learn भी करेंगे so that it will be good for your future learnings also. So this was all about today's sheet. If you are having any kind of problem in any question, any subject, you can ask me. Thank you.